अच्छा जी, अब पॉप ऑपरेशन देख लेते हैं। पॉप ऑपरेशन के अंदर आपने क्या करना है? तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस द सेम सिनेरियो। लेट्स से आपके पास कोई एक एक नोड है, दैट इज़ योर फर्स्ट नोड, राइट? एंड इफ़ इट इज़ द ओनली नोड, तो देन आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। आप इसको जो है वो इसको रिमूव कर सकते हैं। यू कैन फ्री दिस स्पेस बिकॉज दिस इज़ द ओनली नोड दैट इज़ प्रेजेंट, सो यू कैन पॉप इट आउट, ठीक है? और हेड जो है देन या टॉप जो है दैट वुड प्राइमरीली बी पॉइंटिंग टू नल इन दिस पर्टिकुलर केस, जो कि इसमें है, बिकॉज दिस इज़ नॉट पॉइंटिंग। सो लेट्स से कि इस वक्त अगर एक ही नोड पड़ा हुआ है तो टॉप आपके पास यहाँ पे होगा, राइट? सो द कॉन्सेप्ट हेयर इज़ कि लेट्स से कि इसका अपना एड्रेस, लेट्स अज्यूम कि इसका अपना एड्रेस 1000 है, तो टॉप के अंदर इस वक्त जो एड्रेस पड़ा होगा दैट वुड बी 1000, राइट? सो प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ये करेंगे कि यू विल एक्चुअली स्टोर दिस इंफॉर्मेशन in the null, I mean in a temporary node, ठीक है? और ये जो टॉप में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, इधर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, या इस वक्त जो टेम्पररी नोड में जो एड्रेस पड़ा हुआ है, आप इस एड्रेस को 1000 से रिप्लेस कर देंगे, तो टॉप वुड प्राइमरीली नाउ बी पॉइंटिंग टू नथिंग, और इसको आप फ्री कर देंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू विल एक्चुअली बी डूइंग। अच्छा, अगर आपके पास दो हैं एलिमेंट्स, उस सूरत में द सेम प्रोसेस वुड एक्चुअली बी डन। सो लेट्स से कि एक आपके पास नोड यहाँ पे है, वन नोड, let's say this contains 4 and it's pointing to null, और इसका अपना एड्रेस let's say 1000 है, ठीक है? और एक और नोड आपके पास पड़ा हुआ है which contains let's say 6, और इसके अंदर 1000 पड़ा होगा, बिकॉज दिस वुड कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट विच इज प्रेजेंट हियर, और इसका अपना एड्रेस लेट्स अज्यूम 2000 है, ठीक है? तो योर टॉप पॉइंटर इन दिस पर्टिकुलर केस इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड, और इसके अंदर जो एड्रेस पड़ा होगा that is primarily 2000. So this would be the address that would be present in this particular scenario. So what you'll do is कि आप एक टेम्परेरी नोड जनरेट करेंगे टॉप के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, या जिस नोड को टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा है, उसको कॉपी कर देंगे इनटू दिस टेम्परेरी नोड। सो 6 विल कम हेयर एंड 1000 विल कम हेयर, ठीक है? अब टेम्प के अंदर ये जो एड्रेस पड़ा हुआ है आपका, ये एड्रेस जो है वो आप कॉपी कर देंगे इनटू टॉप, तो टॉप जो है वो 2000 की बजाय नाउ दिस वुड कंटेन 1000, राइट? एंड वंस यू हैव डन दिस, सो ये जो एरो जो है और ये जो पॉइंट जो है, नाउ दिस वुड एक्चुअली बी पॉइंटिंग टू दिस एड्रेस, ठीक है? और जैसे ही आप ये कर लें उसके बाद यू कैन डिलीट दिस टेम्परेरी नोड, and so this temporary node would actually be deleted, and the space would actually be freed in this particular scenario, right? So this is how the pop operation would actually take place, और हर वक्त टॉप के अंदर जो है वो जो टॉप नोड है आपके पास, उसका एड्रेस जो है वो पड़ा होगा। सिमिलरली द अदर ऑपरेशन इज एक्चुअली द पीक ऑपरेशन। सो पीक ऑपरेशन इज क्वाइट सिंपल। आपने टॉप देखना है, टॉप के अंदर जो एड्रेस इस वक्त प्रेजेंट है, आई मीन उस एड्रेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, वो जो जहाँ जिसको भी वो पॉइंट कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को आप डिस्प्ले कर दें, एंड दैट वुड एक्चुअली बी द पीक प्रोसेस के टॉप के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, देन देर कुड ऑल्सो बी अ डिस्प्ले प्रोसेस, डिस्प्ले फंक्शन में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं आपके स्टैक के अंदर, आप उसको जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। Okay, so now what we'll do is we'll just see the implementation of this, और implementation के लिए we'll open an editor. Let's just open an editor and see how this implementation can actually be done.
I'll just share this screen, this new screen with you, um, and then we'll just try to write down a code that actually stores this particular, I mean, shows you the code of this implementation. Okay, so to start with, let's say कि singly linked list के साथ हम करना चाह रहे हैं. So the class definition, we'll start with the class definition. So this is the class definition that you have created. We'll call this a node generating class. This would be public information present here. Data जो है that is an integer, और फिर एक आपने pointer आपने define कर दिया data member which is we are calling it the link. ठीक है, so ये दो होंगे. Data would contain the data of that particular node and link would contain the address of the next node जो कि stack के ऊपर पड़ा हुआ है underneath the top node, right? So this is how this would look like. अच्छा, इसके अंदर we can also like add, and we'll actually have to add another node which we'll call the top node, जो कि हर वक्त जो है वो top of the stack को point कर रहा होगा. So we'll actually be generating another node which we'll calling it top. Okay, now let's see the push operation क्या होगा. And push would be a function, and that would, we can call it a void function. Yeah, I mean the return type could be void. It would take in the data value, and the first thing that you will actually be doing in this function is कि आप you'll actually be generating a node, and this is dynamic allocation that you are actually doing in this particular case. आपने एक node generate कर लिया, then once, and this is the temporary node that you have generated. Remember the concept that we have just seen. Then you will check कि क्या आप इसमें add भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते. Do you have enough space to dynamically allocate this? For that you'll just temporarily you'll see that whether this temp node has been generated or not, and if the temp node has not been generated, so then it would be an heap flow error, and a simple if statement would actually work in this particular case. So heap flow overflow error आपके पास आ जाता है. अच्छा, in case you are able to generate this, then what you will do is कि आप temp के अंदर अपना डेटा, जो भी आपने डेटा एंटर करना है वो आप ऐड करेंगे, और temp का जो लिंक है that would contain the address of the previous top, जो इससे पहले top element था उसका एड्रेस ये कंटेन कर रहा होगा, राइट? और फिर so this is how you will actually be doing this. Quite simple. You'll actually be doing this thing. temp data के अंदर जो डेटा आपने as a function input आपने इसमें डाला है that would actually be generated, और temp के link के अंदर जो है जो previous top था उसका प्रीवियस टॉप का जो एड्रेस था वो आपके पास पड़ा होगा, ठीक है? और फिर आपने करना क्या है कि ये जो प्रेजेंट टेम्प नोड है, यू विल मेक दिस प्रेजेंट टेम्प नोड एज the top node, and this is what you'll do. Okay, you'll simply overwrite the top information. ठीक है? So the node that has been generated temporarily, that would primarily become your, or fundamentally that would become your new top. ठीक है? So this is the push operation. Quite simple. Then let's see we can also check if a utility function or a function that simply checks whether the stack is empty or not. You will just have to see कि अगर आपके पास stack empty है तो top जो है वो null को पॉइंट करना चाहिए. देयर इज नथिंग टू बी पॉइंटेड इन दिस पर्टिकुलर केस. इफ इट इज ऑलरेडी एम्प्टी तो नल किसी को भी पॉइंट नहीं करेगा. पीक क्या करेगा? पीक आपका जो है वो टॉप मोस्ट जो नोड है उसको प्रिंट कर देगा, टॉप मोस्ट नोड को प्रिंट करेगा. दिस इज व्हाट पीक वुड एक्चुअली डू.
ठीक है जी, ओके। सो लेट्स जस्ट सी कि पीक फंक्शन क्या करेगा, टॉप मोस्ट नोड को उठाएगा। अगर वो एम्प्टी नहीं है आपकी स्टैक, तो टॉप मोस्ट नोड को उठाएगा। दिस इज व्हाट पीक इज एक्चुअली डूइंग। टॉप मोस्ट नोड को उठाएगा और उसको वो रिटर्न कर देगा, और फिर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई मीन टॉप का डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा, प्रोवाइडेड दैट योर स्टैक इज नॉट एम्प्टी। And then comes the pop operation. Now this is also similar to what push is doing, but this would be in the opposite form. ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो पॉप में सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि आपकी कहीं स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर अगर स्टैक एम्प्टी है तो आप कुछ भी पॉप नहीं कर सकेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप एक फंक्शन डिक्लेयर करें, और उस फंक्शन में आपने एक टेम्परेरी नोड डिक्लेयर किया है, जैसे पुश के अंदर आपने किया था। आपने ये चेक करना है कि आपका टॉप जो है वो नल तो नहीं है। अगर टॉप आपका नल है तो दैट मीन्स कि योर स्टैक इज़ एम्प्टी, और स्टैक अगर एम्प्टी है तो आप पॉप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू the other part. So if your stack is not empty, तो then this is what you'll actually be doing. ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि टॉप जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है, टॉप जिस एलिमेंट को या जिस नोड को टॉप पॉइंट कर रहा है उसको टेम्प में कॉपी कर लें। सो यू जस्ट कॉपी द टॉप node into your temporary node. So this is what you'll actually be doing. That would be the first thing that you'll actually be doing. The next thing what you'll be doing is कि जो टेम्परेरी नोड, जो टॉप की इंफॉर्मेशन है, दैट एक्चुअली गोज इनटू आवर टेम्परेरी नोड। अच्छा, तो जो टॉप, अच्छा ओके, so now you'll actually the next step would be कि आपके पास जो टॉप नोड पे जो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जो इंफॉर्मेशन आपके पास टॉप नोड पे है, उसमें जो लिंक में जो एड्रेस पड़ा होगा, वो कौन सा एड्रेस पड़ा होगा? लिंक में जो एड्रेस पड़ा होगा, दैट एड्रेस इन द लिंक वुड प्राइमरली बी द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। ठीक है, तो आप वो अपने टॉप में वो जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है वो आप अपने टॉप में कॉपी कर दें। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर आवर डिस्कशन, यही हम कर रहे थे। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो टेम्परेरी नोड है उसको आप नल को पॉइंट कर दें और फिर उसको फ्री कर दें, राइट। एंड दिस इज़ व्हाट यू विल बी डूइंग नेक्स्ट, राइट। ओके, राइट। एंड टेम्प को में जो एड्रेस पड़ा हुआ था उसको आप नल कर दिए, एंड देन यू विल एक्चुअली बी फ्री टेम्प। आपने रिलीज कर दिया वो मेमोरी जो कि टॉप नोड की थी। तो प्रीवियसली टॉप नोड के अंदर क्या पड़ा हुआ था? एड्रेस ऑफ द प्रीवियस, आई मीन द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस टॉप। अब आपने क्या किया है कि जो प्रीवियस टॉप के अंदर जो लिंक में एड्रेस पड़ा हुआ था वो आपने नए टॉप के अंदर ऐड कर दी, यानी टेम्प के अंदर, प्राइमरीली टेम्प के अंदर भी वो इन्फॉर्मेशन वही पड़ी हुई है जो कि टॉप के अंदर पड़ी हुई है। तो टॉप से आपने टेम्प में कॉपी किया, टेम्प को नल पॉइंट किया, एंड देन यू विल एक्चुअली फ्री द मेमोरी। और जो टॉप के अंदर जो प्रीवियस एड्रेस पड़ा हुआ था उसको आपने जो नेक्स्ट नोड था उसके एड्रेस से आपने रिप्लेस कर दिया, एंड दिस इज व्हाट हैज़ बीन एक्चुअली डन। एंड देन लेट्स जस्ट, और फिर ये डिस्प्ले का फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू ब्राउज थ्रू द नोड्स, इंक्रीमेंट करते जाएंगे आप नोड को, एंड देन यू विल primarily be printing that out. ठीक है, और I mean there could be multiple ways of actually doing that. You can actually print that out. So if it is stack underflow तो नहीं है, अगर नहीं है तो प्रिंट कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अगर आप नहीं कर सकेंगे और टेम्प में आप टॉप का एड्रेस डालें, और अगर जब तक टेम्प जो है वो नल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप जो है ना वो प्रिंट करते जाएं और टेम्प को बेसिकली इंक्रीमेंट करते जाएं
with the next address that is present here. So this is primarily be doing this. तो अगली दफ़ा जब आप आएंगे तो नया नोड आपके पास आएगा. So you start from the top and then you move one node until you reach the last node जिसके अंदर आपके पास next address जो पड़ा होगा वो temp का address जो है वो पड़ा होगा. अच्छा, and then let's just write down the driver program और ड्राइवर कोड जो इसका है. Let's just write down the driver code main and see how this actually works. So driver code हम इसके अंदर लिख देंगे and this is your driver code. Primarily what you are doing is that you are pushing some values here. आपने ये values को push किया. The last value that you pushed was 44, so 44 should be at the top. और फिर आपने display function call कर लिया. ठीक है, फिर आपने पीक किया. पीक जो है दैट वुड प्राइमरीली गिव यू द टॉप नोड जो कि 44 है इन दिस पर्टिकुलर केस. उसके बाद आपने दो एलिमेंट्स को पॉप किया. उसके बाद आपने दोबारा से उसको डिस्प्ले कर दिया और फिर पिक किया उसके टॉप एलिमेंट आपको. उसके बाद आपको मिल जाएगा. सो इफ़ यू रन दिस कोड यू विल सी के what actually comes out in this particular case. So let's see कि क्या इसमें आया है. ओके, सो यू कैन सी कि सबसे पहले आपने डिस्प्ले करवाया. सो 44, 33, 22 एंड 11 इज राइट एट द एंड. सबसे पहले आपने उसको पुश किया था. टॉप एलिमेंट इस केस में 44 है. फिर आपने पॉप कर दिया. पॉप करने के पॉप आउट 44 और 33 को आपने पॉप आउट कर दिया. यू लेफ्ट विद 22 एंड 11 और टॉप एलिमेंट आपके पास 22 आपके पास बच गया. सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम would actually be running. Okay, so this is implementation of stack using a link list, single link list. There could be multiple ways of implementing this. Now this is probably one of the easiest and the simplest way of doing it. Okay, so thank you very much. I'll actually be uploading the other linear data structures soon, and you will just have a look at that. Thank you.